In the last class, we have completed time and work, and we started with the second part of the same thing, that is time and distance. The time and distance हमने चालू किया था, and today we are going to cover the details about time and distance. कि कौन-कौन से type के questions होते हैं, how we can approach to solve those questions. Before I start, I'll repeat once again. I'll repeat this thing. If you are preferring different types of books, अगर आप अलग-अलग book prefer कर रहे हो, so there are lots and lots of shortcut formula which are given. Please give me 1 minute. Sorry for this. So I was saying that if you refer different books, अगर आप बहुत सारे book refer करते हो, so there are chances that you'll get lots of shortcuts, lots of formulas directly जिससे answer आ जाता है. If you are preparing for exams like banking की exam है, CGL है, ऐसी exam की prepare करते हो, so they have types of question, type 1, type 2, type 3, and for all types they have defined formulas. Right, so 5-6 formulas are there that you will learn and आप solve कर सकते हो. But what is the thing is the main point that you need to remember is उन सब exam, those all exams, they are time bound and there is very short duration of time. तो अगर मैं roughly आपको बताऊं, there are 100 questions in 60 minutes or 90 minutes. So you get less than 1 minute for each of the question. But यहाँ पर ऐसा नहीं है. Here you have the entire 3 hours for 65 questions, right? 2.5 hours or 3 hours for entire 65 questions. So आपके पास बहुत सारा time. You can utilize those times. So instead of going towards shortcut, clear your basics. That will be easier for you to appear or to answer all the questions without anything. Or second thing, अगर आप बात करो gate की, so there are lots and lots of other formulas that you need to remember. Technical side में. So it's better to avoid the shortcuts in this case. Go stick with the basics. बाकी आपको वहाँ पर जो formulas हैं वो तो याद रखने ही. Right. So let's start with the questions. Yes, a train requires 3 seconds to pass a pole while it requires 8 seconds to cross a stationary train, which is 150-meter long. What is the speed of train? देखो दो condition दी हुई है. I'll just explain this question, then you can solve this one. So there is a train. और ये दो condition है. पहली condition में क्या हो रहा है? It is just crossing a pole. Right? There is a pole over here, जिसको वो cross कर रही है. And second condition, the train is crossing another train. Crossing another train, which is 150 मीटर. और दोनों केस में आपको टाइम दिया हुआ है. यू नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. ठीक है. क्या ध्यान रखना है? व्हाइल इन द फर्स्ट केस, व्हाइल क्रॉसिंग द पोल, the distance traveled by the train will be equal to the length of the train. Let us assume it to be L. L assume कर लेते हैं हम इसको. So the distance traveled by the train while crossing this pole will be equal to the length of the train. While in the second case, the total distance traveled by the train will be equal to the length of this train. जो यहाँ पर जो ट्रेन है ये तो क्रॉस करेगी और खुद की लेंथ भी क्रॉस करेगी. So the second case में जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा that will be 150 plus L. ठीक है. So आपके पास दो डिस्टेंस दिए हुए हैं, दो आपको टाइम दिए हुए, you will get two speeds, two equations, और दो unknown होंगे L और speed. You can find out the speed. Try to solve this one, then we'll see how we can solve this. So 30 meters per second. I got one answer. What about others?
Okay, let's start solving this question. So case 30. okay, 30. 30 is the correct answer. Case 1. What was the case 1? देखो एक फॉर्मूला हमें याद रखना है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वहां से हमारे दो और फॉर्मूले बनते हैं डिस्टेंस और टाइम का, जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं. Right. So the case 1 says that there is the train requires 3 seconds to pass a pole. Right. While passing a pole, it is covering a distance equal to the length of train. So speed जो होगी train, let's assume it to be s, is equals to distance. What is the distance? L upon time. Time is 3. ठीक, ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई. Right. और rather than calling it to be the first equation, इसको फर्स्ट इक्वेशन नहीं बनाते हैं. Let me change the subject. मैं यहाँ से कर लेता हूँ. I can say that the length of train will be equal to 3 times s. That is my first equation. Now case 2 की बात करते हैं. What is case 2? Now case 2 में देखो स्पीड तो सेम ही है, स्पीड सेम है. Now the distance changes. The distance is equal to the length of train plus 150 meter. ठीक है, तो 150 मीटर क्या थी? जो स्टेशनरी ट्रेन, ये जो स्टेशनरी ट्रेन है इसको क्रॉस करना है और खुद की लेंथ क्रॉस करनी है. टोटल L प्लस 150 डिस्टेंस क्रॉस करना है और उसके लिए टाइम लग रहा है 8 seconds. So from here you can get that L plus 180 is equals to 8s, or L is equals to 8s minus 150. That is the second equation. Now you can compare 1 and 2 simply, because LHS में दोनों साइड L है, so you can compare 1 and 2. So comparing 1 and 2 gives 3s is equals to 8s minus 150. 150 को इधर लेके आते हैं तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में, एंड वहाँ हो जाएगा 8s minus 3s, which becomes 5s. 5s equals to 150 और s equals to 30. अच्छा, यूनिट कैसे आएगी? सो यूनिट में यहाँ पर 150 मीटर दिया हुआ है एंड वी हैवंट कन्वर्टेड इट, तो यहाँ पर मीटर हो जाएगा, और टाइम जितना भी दिया हुआ है सेकंड्स में दिया हुआ है, सो पर सेकंड हो जाएगा. 30 मीटर पर सेकंड विल बी आवर आंसर. नाउ फॉर अ चेंज, इफ आई आस्क यू कि किलोमीटर पर आवर में कितना टाइम होगा, right? If you convert it into kilometer per hour, can you tell me what will be the answer? 108. Okay, that was quick. Right, so it's simple. देखो किलोमीटर पर आवर से जब हम मीटर पर सेकंड में आते हैं, so we multiplied by 5/18. In this case it will be reverse, multiplying by 18 by 5. So simply 5 ones are 5 6 are, this will get cancelled. We'll get 18 6, that is 108 kilometer per hour. Right, so this will be your answer in kilometer per hour. अच्छा, ये चीज क्यों इंपॉर्टेंट बन जाती है? एट सर्टेन टाइम्स दे चेंज द यूनिट्स, एंड देन आप आंसर में ढूंढ रहे होगे भाई आपका आंसर कुछ और आ रहा है और यहाँ पर आंसर कुछ और आ रहा है. इफ यू डोंट पे अटेंशन टू द यूनिट्स, ठीक है, ऐसा होता है एंड ऐसा हुआ है, बहुत बार हुआ है. दैट्स यू हैव टू कीप, यू हैव टू स्टे अटेंटिव ड्यूरिंग द एग्जाम. तो ये ध्यान रखना है कि कौन से यूनिट्स में पूछा गया है और कौन से यूनिट्स में आपका आंसर आ रहा है. यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Ashling drives from Plymouth to Southampton, a distance of 160 miles in 4 hours. She then drives from Southampton to London, a distance of 90 miles in 1 hour 30 minutes. Determine her average speed of each journey. The question is very simple, and I have given you that particular thing जो आपको ध्यान रखनी है. Average speed is basically total distance ऑन टोटल टाइम. ये ध्यान रखना. गलती से भी दो अलग अलग स्पीड निकाल के उसका एवरेज लेने में बैठ जाना. इट इज ऑलवेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सो अगर इन दो केस में अगर आपको दो अलग अलग स्पीड दी होती तो भी आप उसमें से पहले डिस्टेंस निकालते और टाइम निकालते, एंड देन यू वुड हैव सॉल्व्ड. टेल मी द फाइनल आंसर. 45.45 miles per hour. Okay, so I got one answer. Let's see. Total distance becomes distance 1, that is 160, plus distance 2, that is 90. Right, और टाइम कितना हो रहा है?
पहले में लग रहा है 4 आवर्स, सेकंड में लग रहा है 1 आवर 30 मिनट्स। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1.5, बिकॉज 30 मिनट्स इक्वल्स टू 0.5 आवर्स। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। 30 मिनट्स इक्वल्स टू 0.5 आवर्स, तो डायरेक्टली नहीं होता कन्वर्ट, वी डिवाइड इट बाय 60, तो 1.5 हो जाएगा यहाँ पर। दैट बेसिकली मींस 250 डिवाइड बाय 5.5 और सिंपली 50 डिवाइड बाय 1.1। अगर आप 5 से कैंसिल करते हो और अगर आप डेसिमल हटाते हो, so it becomes 500 by 11, which is 455 by 11 miles per hour. ना इंटरेस्टिंगली आपको क्या ध्यान देखना है, देखो यहाँ पर ये तो हमारा आंसर आ गया। आप क्वेश्चन में गलती कहाँ पर होती है मैं आपको बता दूं। देखो 5/11 आंसर आ रहा है या 45.45 आंसर आ रहा है, 7 का आंसर आ रहा है, सो यू थिंक यार ये ऑकवर्ड आंसर है, और कौन से आंसर है देख लेते हैं। नाउ देखो मैं दूसरी चीज कर रहा हूँ, आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस इन द अदर वे। Let's find out the average speed in the first case. What was the average speed in the first case? 160 miles in 4 hours, यानी कि yes, पहला जो केस है उसमें 160 माइल्स अगर 4 आवर में किए तो पर आवर कितने माइल्स होंगे? 40. सिंपल, 40 माइल्स, 40 माइल्स पर आवर। वहीं पे अगर मैं बात करूं सेकंड केस की, इन दैट केस 90 माइल्स की है 1.5 आवर्स में, राइट? सो 90 माइल्स इन 1.5 आवर्स कितनी होगी स्पीड? 60. People what they do is they take these two speeds, दोनों एवरेज स्पीड मिल गई है, इन दोनों का एवरेज लेते हैं, they will get to 50। तो भाई 50 आ गया हमारा, 50 इज द करेक्ट आंसर, और वो आपको ऑप्शन में दिया हुआ भी, बट दैट इज नॉट द करेक्ट सी। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई। देखो एवरेज स्पीड कब आप एवरेज ले सकते हो, और कब आप डिवाइड बाय 2 कर सकते हो उनको। जैसे कि यहाँ पर मैं 40 + 60 डिवाइड बाय 2, ये कब हो सकता है? ये तभी पॉसिबल है जब दोनों डिस्टेंस आपके सेम, ये वहां पर पॉसिबल हो सकता है जब आपके दोनों डिस्टेंस सेम। लेकिन यहाँ पर तो क्लियरली दिया हुआ है, एक 160 है दूसरा 90, दोनों डिस्टेंस में बहुत डिफरेंस है। सो ये चीज वहां पर एप्लीकेबल होती है, ऐसा नहीं है हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती है। जहां पर आपकी डिस्टेंस सेम हो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द एवरेज ऑफ टू स्पीड्स, बट ऐसा रेयरली केस में आएगा जब आपको दोनों डिस्टेंस सेम दिए हो, अलग अलग दिया हुआ है, सो यू कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट। इस केस में आपको दोनों का टाइम अलग अलग निकालना होगा, दोनों का डिस्टेंस अलग अलग निकालना होगा, एंड यू हैव टू डिवाइड। Yes, let's go to the next question. Let's try to solve this one. .8. I got one answer. Let's see what is the correct answer. I'll just give you one hint over here before you actually come into answer, जो मुझे पहले देनी चाहिए थी। This 45 mph, the mph stands for, yes, can anyone tell me? Mile per hour. Very good. Stands for miles per hour. ठीक है, ये माइल्स पर आवर में, एंड यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस दिया हुआ है दैट इज इन किलोमीटर, सो वी शुड नो व्हाट इज द कन्वर्जन बिटवीन माइल्स एंड किलोमीटर। यू शुड रिमेंबर दिस पार्ट, 1 mile is equals to 1.61 kilometer. This is the conversion. ये conversion के through you can convert it and you can find out the time.
ये एक important चीज है that you should know. Now solve this one and tell me the answer. I got one answer in the chat box anyways. That is the correct answer also. So 2.4. Yes, that is the correct answer. Let's see how we can get the correct answer. So average speed dVA 45 miles per hour. So what I'll do is I'll just convert this speed into kilometers per hour. So average speed is 45 miles per hour, which turns out to be 45 was 1.61 किलोमीटर. ठीक है, तो माइल को मैंने किलोमीटर में कन्वर्ट कर दिया एंड पर आवर इट विल बी एज इट इज. सो स्पीड मिल गया, डिस्टेंस आई नो, आई नीड टू फाइंड आउट टाइम. द टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन speed, which is 175 upon 45 plus 1.61. And if you solve this one, you'll get some answer 2.415 something. This will be a final answer. You can convert it into minutes also if you want, but yes, your answer will be somewhere nearby this. The crack for this question was a mile को आपको किलोमीटर में convert करना है, then only you will get the correct answer. हेलो सर मेरे को लास्ट क्वेश्चन में थोड़ा डाउट था. Yes. जो एस एवरेज 1 और 2 ये कैसे आपने फाइंड बताएं? जो एस एवरेज 1 और 2 है ये गलत मेथड है एक्चुअल में. ये हमको फॉलो नहीं करना है, ठीक है. बट एनीवेज मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे आया. तो मैंने क्या किया, जो जर्नी थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया. ठीक है, तो पहला पार्ट क्या बोल रहा है मेरा, द फर्स्ट पार्ट, लेट मी हाईलाइट विद ब्लू कलर. वो कह रहा है कि 160 माइल्स इन 4 आवर्स, राइट. सो 160 माइल अगर 4 आवर में, तो 1 आवर में कितना होगा, इट विल बी 160 डिवाइड बाय 4, दैट इज 40. सो यहाँ से मेरा फर्स्ट ये एवरेज स्पीड ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी. Second part of journey, let me highlight it with the red color. 90 miles in 1.5, 1 hour 30 minutes or 1.5 hours. So 90 divided by 1.5, which turns out to be 60 miles per hour. ठीक है, तो दो जर्नी है और दो जर्नी के पार्ट्स हैं, दोनों का स्पीड मैंने निकाल रहा था. लेकिन अगर इन दोनों को क्लब करके मैं एवरेज निकाल रहा हूँ, दैट इज नॉट इक्वल टू द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी. ये मैं प्रूव करना चाहता था, इसलिए मैंने ये बताया. कैसे? So इसका आंसर मेरा 2.415 आ रहा है. Let's move on to the next one. Okay, this is an interesting question. A farmer traveled a distance of 61 kilometers in a total of 9 hours. He traveled partly on the foot at the rate of 4 kilometers per hour and partly on bicycle at the rate of 9 kilometers per hour. What is the distance traveled on foot? Try to solve this one. बहुत interesting question.
16 kilometers, sir. 32, sir. तो आंसर आ गया ऑलरेडी. Let me give some hints, then we will start. You can again see the कौन सा सही आंसर है. A farmer traveled a distance of 61 kilometers in 9 hours. He traveled partly on foot. तो देखो total distance मेरे को दिया हुआ है, total time दिया हुआ है. Total distance is 61 kilometer. And for this you have it has taken 9 hours. अब इसमें से थोड़ा डिस्टेंस कौन सा कितना है आई डोंट नो, सो आई विल जस्ट ड्राइंग इट लाइक दिस 4 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर. तो लेट्स से ये वाला जो हिस्सा है दैट इज x, ठीक है. अदर हिस्सा इट विल बिकम 61 माइनस x बाय डिफॉल्ट, ठीक है. सो अब दो पार्ट है, पहला x वाला पार्ट करते हैं, दूसरा 61 माइनस x करेंगे हम. सो इन द फर्स्ट पार्ट द डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. तो टाइम, मैं टाइम को रेफरेंस लेता हूं, टाइम को सब्जेक्ट लेता हूं. तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब यहाँ पर मेरे पास दो दिए हुए, तो मैं लेता हूँ d1 और s1 प्लस d2 और s2. देखो टोटल टाइम मुझे दिया हुआ है 9 आवर्स. डिस्टेंस 1 हमने एज्यूम किया हुआ है x बाय 4 और डिस्टेंस 2 हो जाएगा बाय डिफॉल्ट 61 माइनस x बाय सेकंड की स्पीड हमारी 9. नाउ इफ यू कैन सॉल्व दिस वन यू कैन फाइंड आउट द आंसर ऑफ x. Anyways, x is the distance traveled on foot. Will become 9x minus 61 into 4 minus 4x or sorry plus number. So this will become 36 into 9 equals to 9 minus 4 you will get 5x plus 61 into 4. From here you can take x on one side which will give you 5x is equals to 8. 324 minus 250 244. That's correct. 5x will become, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं you get 80 and x will simply become 80 by 5 that is 16. अब यही 16 किलोमीटर में आएगा आंसर बिकॉज किलोमीटर यूनिट दी हुई है एंड दैट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द फुट एज वी हैव अज्यूम्ड. ठीक है. सो योर करेक्ट आंसर विल बी 16 किलोमीटर पर आवर. अच्छा, इसमें अगर सेकंड चीज पूछता है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय on bicycle, so simply you need to subtract 61 minus 16 you will get the answer. Right? 45 will be the answer. So anyways you can solve this one. It's a simple one. यहाँ पर ध्यान रखना है टोटल टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड और जितनी भी जर्नी के जितने ही पार्ट है ना हर एक के लिए हम टाइम निकालेंगे. सो दिस इज फॉर द फर्स्ट पार्ट, इसलिए टाइम कितना होगा t1 एंड दिस इज फॉर द सेकंड पार्ट, ये टाइम कितना होगा. तो बोल सकता हूँ कि भाई टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2, जितना पैर से चला है और जितना बाइसाइकिल पे चला है. तो उसको समेशन. यस. Now this will be a little bit of lengthier question. Try to solve this one.
Okay, let's see how this question can be solved. I'll give you a little bit of hint. वहाँ से चालू कर सकते हो. Before starting, I'll assume two things. That the original distance that the man is going to cover be x, and original time taken that will be equal to y. Right? Or let's say change करते थोड़ा. हमें टाइम के बीच में दिया हुआ, so टाइम को हम रेफरेंस लेंगे, तो स्पीड और डिस्टेंस लेते हैं. Change it. ओरिजिनल स्पीड को लेते हैं x, ओरिजिनल डिस्टेंस को लेते हैं सही है. डिस्टेंस x, स्पीड y, ये हमें कंफ्यूज नहीं करेगा. सो केस 1 की बात करते हैं. व्हाट इज केस 1? अच्छा, उससे पहले ओरिजिनल टाइम भी कैलकुलेट कर लेते हैं. ओरिजिनल टाइम जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है हमारे पास x और स्पीड है y. सो x बाय y ये कंफ्यूज कम करेगा. ओरिजिनल टाइम हमारे पास x बाय y. अब केस 1 क्या कह रहा है? केस 1 कह रहा है हैड ही मूव्ड 3 किलोमीटर पर आवर फास्टर. मतलब स्पीड ज्यादा होनी चाहिए थी. कितनी? 3 किलोमीटर पर आवर. स्पीड कितनी है? y. अब क्या हो जाएगी स्पीड? y प्लस 3. वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस. 40 मिनट लेस मतलब टाइम जो होता वो 40 मिनट कम होता. यानी कि टाइम कितना था? x माइनस वाई. अब इस केस में टाइम कितना होता? x माइनस वाई माइनस x बाय वाई, सॉरी माइनस 40 बाय 60. ठीक है. और डिस्टेंस कितना रहने वाला था? डिस्टेंस तो उतना ही रहने वाला है x के बराबर. ठीक है. तो यहाँ से बोल सकता हूँ डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि y प्लस 3 rather than this one. Let's take it in terms of time. So original time कितना था? It was x by y. और अब कितना टाइम लगेगा? अब टाइम कम लगेगा बिकॉज स्पीड हैज बीन इंक्रीज. डिस्टेंस उतना ही है x, और अब स्पीड हो जाएगी y प्लस 3. ठीक है. तो x बाय y अपॉन x बाय y प्लस 3, दिस विल बी इक्वल टू कितना टाइम कम लग रहा है? 40 मिनट्स. पर हमें इसको आवर में कन्वर्ट करना है, सो इट विल बिकम 40 बाय 60. ठीक. यू कैन सॉल्व दिस वन. सो अगर आप एलसीएम लेते हो यू विल गेट x टाइम्स y plus 3 minus xy upon y into y plus 3 and 2 by 3. Right. So this will be equal to, if you solve, xy plus 3x minus xy, this whole thing divided by 3 is equals to 2y y plus 3. And यहाँ से xy cancel हो जाएगा, so you get 9x is equals to 2y y plus 3. This becomes your first equation. Let's solve the next one, case 2. Now second case में क्या दिया है? If he had moved 2 किलोमीटर पर आवर slower, so speed यहाँ पर क्या हो जाती? y minus 2 हो जाती. He would have taken 40 minutes more. अब जो स्पीड कम हो रही है उसकी वजह से टाइम क्या हो रहा है? आपका टाइम बढ़ जा रहा है. So आपका जो न्यू स्पीड है that will take more time than the original speed. So new speed कितनी होगी? Distance, that is x divided by speed, ये टाइम हो जाएगा. And the original time was x minus 1. इसकी वजह से जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 40 by 60. फर्क क्या है यहाँ पर? फर्क समझने की कोशिश करना. दैट दिस इज योर ओरिजिनल टाइम एंड दिस बिकम्स योर न्यू टाइम. न्यू टाइम बेसिकली मींस आफ्टर इंक्रीजिंग द स्पीड. सो स्पीड इंक्रीज की तो ऑब्वियसली जो नया टाइम होगा वो ओरिजिनल टाइम से कम होगा. इन दिस केस दिस बिकम्स योर न्यू टाइम आफ्टर रिड्यूसिंग द स्पीड, एंड दिस बिकम्स योर ओरिजिनल टाइम. तो अगर आप स्पीड डिक्रीज कर रहे हो, तो जो नया टाइम लगेगा वो इट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी ग्रेटर देन द ओरिजिनल टाइम. ठीक है. तो ये चीज हो गई यहाँ पर. नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन. सो यू गेट xy minus xy plus 2x. This will be your over here, and divide by y times y minus 2
this is equal to again 2 by 3. So इसको अगर आप solve करो, this xy will get cancelled, so you'll get 6x is equals to 2y y minus 2. This is equation number 2. Now to solve this one, I'll just simply do one thing. देखो दोनों side x भी है y भी है, यहाँ पर 2y है, यहाँ पर भी 2y है. So to solve this one simply, what I can do is I can divide. Right? So I'll be dividing 1 by 2. ठीक है, तो 1 को हम ऊपर रखते हैं तो यहाँ पर 9 by 6 x x कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू 2y विल गेट कैंसिल, विल गेट y by 3 अपॉन y minus 2. ठीक है, यहाँ से मेरे पास अगर आप सॉल्व करते हो यू विल गेट 9y minus 2 is equals to, sorry, 9y minus 18. Let me take it to the next slide. Next slide में लिख देते हैं. क्या था हमारे पास 9 by 6 is equal to y plus 3 upon y minus 2. Y plus 3 upon y minus 2. This becomes 9y minus 18 is equals to 6y plus 8. This will become 9 minus 6, that is 3, or 18 or 18, 36. Y becomes 36 by 3, that is 12. Now what was y basically? Y जो था हमारे पास, it was the speed. तो मुझे निकालना है original distance. So any of the equation if I use, I can get the answer. So let's try to do it in equation number 1. ठीक, equation number 1 ले लेते हैं हम यहाँ से. इक्वेशन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, क्या है वो 9x is equals to 2y y plus 3. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू. 9x equals to 2 into 12 in bracket 12 plus 3. So this becomes x equals to 2 into 12 into 15 divided by 9. Get cancel simply. यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा. So the final answer will be 5 4 is 20 to the 40. So 40 kmph will be the final. Right. So this will be your final answer. Lengthy question है. अगर आप टिपिकल बेसिक के हिसाब से करने जाते हो, जो आपका फंडामेंटल उसके हिसाब से करने जाते हो तो लेंथी क्वेश्चन है, बट यू विल गेट द आंसर. आपका 12 अभी आंसर आ गया y का, यानी कि डिस्टेंस का. दिस इज योर डिस्टेंस एंड दिस इज योर स्पीड. तो दोनों आ गए आपके पास. यू आर सपोज टू फाइंड आउट द डिस्टेंस, दैट इज सॉरी, ये x हमारे पास डिस्टेंस है. ये डिस्टेंस है, x was the distance and y was the speed. So आपको जो भी निकालना है, we can find it out. Let's go to the next question. It's an interesting question. It takes 8 hours for 600 kilometers journey. If 120 kilometer is done by train and rest by car, okay, तो एक टाइम दे दिया हमें. It takes 20 minutes more if 200 kilometers is done by train and rest by car. So दो condition दी गई. You are supposed to find out the ratio of the two trains. Try to solve this one.
let me give you certain hints over here. कैसे कर सकते हैं इसको? Simply what I'll do is I don't know the speed of train and speed of car. I'll make an assumption. I'll make the assumption that the speed of train be x kilometers per hour and that of car, the speed of car be y kilometers per hour. So 40, sir. So you are supposed to find out ratio. 40 is to 1. 40 is to 1. चलो देखते हैं. I'll tell you, maybe check कर लेना कुछ शायद कुछ method में अगर करो. So I'll take two cases. And first of all, the first case. The first case says that the total time taken is 800 for 600 kilometers journey. ठीक है. So the time क्या होता है हमारे पास? Time is equals to distance upon speed. ठीक. अब यहाँ पर टोटल टाइम की बात करो तो मैं लिख सकता हूँ भाई टोटल टाइम जो होगा तुम्हारे पास it is basically the time taken by the train, time by train plus time taken by car. अब ट्रेन ने कितना टाइम लिया हुआ है तो टाइम ट्रेन का डिस्टेंस अपॉन ट्रेन की स्पीड प्लस कार का डिस्टेंस, कार ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है अपॉन कार की स्पीड, स्पीड ऑफ कार. सो यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ ट्रेन अगर आप देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ है 120 किलोमीटर इज डन बाय ट्रेन. So 120 kilometer by train. Speed of train we have assumed to be x. So x plus distance that covered by car. So 600 kilometers की जन रही है, 120 ट्रेन ने कर दिया तो बचा हुआ डिस्टेंस हो जाएगा 480. 600 minus 120 480. And speed of car हमने assume किया हुआ है 1. So this is equal to the time taken और time कितना लगा हुआ है 8 hours. This becomes your यहाँ पर we'll do one thing. We'll divide the entire equation by 8 on both the sides. दूसरी साइड हम 8 से डिवाइड कर लेते हैं. So we'll get 1 equals to, this will become 15 by x. This will become 60 by y. Okay, this will be equation number 1. ठीक. Case 1 done. Let's go for case 2. Case 2 क्या बोलते हैं? So similar to the way we have done we have done case 1, case 2 भी करते हैं हम. टाइम जो होगा ये दो चीजों से बना हुआ होगा. It takes 20 minutes more. 20 minutes more मतलब 8 घंटे से टाइम ज्यादा लगेगा, 20 मिनट ज्यादा लगेगा. If 200 kilometer is done by train, so distance by train is 200 kilometer, speed of train is x. अच्छा 200 अगर ट्रेन से कर रहे हैं, कार से कितना बचेगा 400 by speed of car. टाइम कितना हो गया? टाइम will be 20 minutes more. So 20 by 60, that is 1 by 3. So 8 1 by 3 will be more. That will be 200 by x plus 400 by 1. ठीक है. So 20 by 60 को मैंने 1 by 3 ले लिया तो 8 into 3 24 25. It will become 25 by 3 is equals to 200 by x plus 400 by 1. Can we divide the entire equation by 25? Yes. So it will become 1 by 3, 8 by x plus 16 by 1. This is equation number. ठीक. I'll do one more thing. I'll do one more thing in both the equations. So make it simpler. ठीक है. क्या करते हैं हम? Equation number 1 जो है, equation number 1 में I will be dividing the entire equation by 15. 15. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? LHS में हो जाएगा मेरे पास 1 by 15. RHS में पहला टर्म बन जाएगा 1 by x. दूसरा क्या हो जाएगा? 60 by 15 यानी कि 4 by y. This let us name it to be equation number 1. Similarly जो case 2 है उसको भी मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूँ. In case 2 I will be dividing the entire equation by 8. तो 1 by 3 already है, divide by 8 हो जाएगा तो 1 by 24 हो जाएगा. This will become 1 by x और 16 by 8 हो जाएगा 2 by y. Now why I have done so is so that I can get 1 by x on both the sides. Now if you subtract 1 by 2, let 1 by 2 करते हो तो आपको डायरेक्टली x तो सब्ट्रैक्ट हो ही जाएगा. आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है. You just need to change y. So can you solve equation number 1 and 2 and tell me what is the answer you are getting? Excuse me, sir.
यस सर यहाँ ये केस 2 में 8 1/3 कैसे आया? ये 1/3 कैसे है? 8 1/3 सेकेंड स्टेप। ओके, देखो हमें क्या दिया हुआ है कि सेकंड केस में इफ यू सी ये दिया हुआ है इट टेक्स 20 मिनट्स मोर। 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। अच्छा पहले कितने लग रहे थे? पहले लग रहे थे 8 आवर्स। अब 8 आवर्स में 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। 20 मिनट्स को अगर मैं आवर्स में कन्वर्ट करता हूँ सो इट विल बिकम 20/60। ठीक है, तो 8 प्लस 20/60 बिकम्स 1/3। ठीक, और you can be simply written as 8 1/3 या तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो। ओके ये चीज हो गई यहाँ पर। Now solve equation 1 and 2 and tell me the answer of x and y. What you are getting? इक्वेशन से हमारे पास 1/15 y80 y का एक आंसर आया है 18। तो इक्वेशन आई है मेरे पास सॉल्विंग 1 एंड 2। सॉल्विंग करना बेसिकली आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने में हम इसको काफी इजीली कर सकते हैं। करते 1/15 माइनस 1/24। 1/x 1/x cancel 4/y minus 2/y। So 4 इसमें तो राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर सेम है, so you don't need to do anything। आप सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एलएचएस में अगर बात करें आप तो 120 आएगा एलसीएम, राइट? 24 5 are 120 and 15 8 are, so 8 minus 5 यहाँ पर आ जाएगा आपके पास और दिस विल बी 2/1। ठीक है, और यहाँ से y निकालोगे तो हो जाएगा 2/3 into 1। This will become 80, that's correct। और यहाँ से अगर आप x निकालने की कोशिश करते हो आप कोई भी इक्वेशन में डाल दीजिए। इक्वेशन 1 में अगर मैं डालता हूँ तो इक्वेशन 1 में आ जाएगा 1/15 प्लस is equals to 1/x plus 4/80 यानी कि 1/20। 1/20 को अगर मैं उधर लेके जाता हूँ it will become 1/x equals to 1/15 minus 1/20। एलसीएम की बात करें तो 60 आ जाएगा 4 minus 3। सिंपल। x की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 60/4 minus 3 that is 60/1 और 60। तो मेरे पास y की वैल्यू भी आ गई है, x की वैल्यू भी आ गई है। इफ यू वांट टू फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x raised to y will be 60/80 और 3/4। that is the required answer। So we started with simple questions। हमने obviously we started with pretty simple questions, but these questions are actually of good level and that requires a little bit of calculations by you। ठीक है, तो आप इसको अटेम्प्ट करिएगा एक बार, फिर से ट्राई करने की कोशिश करना इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, I'll tell you how to solve this one. You can do it. Calculated to reach the point A at 8 meters, he will reach. The question has been given that Hatim is traveling on a cycle and he has calculated to reach point A at 2 p.m. If he travels at 10 km per hour, he will reach there at 12 noon if he travels at 15 km per hour. Sir, 12 kilometer per hour. No, he will reach at 12 noon if he travels 15 km per hour. अच्छा, answer बोल. Yes, sir. His answer is correct, 12 km. ठीक है. सो पहले हम केस कंसीडर करते हैं कि भाई यहाँ तक का केस जो है इसको कंसीडर करते हैं, देन विल मूव फॉरवर्ड. सो हातिम इज ट्रैवलिंग ऑन हिज साइकिल एंड इज कैलकुलेटेड टू रीच अ पॉइंट ए. एक पॉइंट है ए जहाँ पर उसको 2 पीएम पे पहुंच जाएगा. कब? अगर वो 10 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, और 12 नून पहुंच जाएगा इफ इट वॉक्स बाय 15 किलोमीटर और इफ इट ट्रैवल्स बाय 15 किलोमीटर पर. सो डिफरेंस कितना आ रहा है? 5 किलोमीटर की स्पीड का डिफरेंस है. तो अगर 5 किलोमीटर की स्पीड बढ़ जाती है तो 2 घंटे का टाइम कम हो जाता है. डिफरेंस किसमें दिया हुआ है? टाइम में दिया हुआ है. सो दैट इज अ थिंग दैट यू नीड टू नोटिस. तो यहाँ पर मुझे टाइम में डिफरेंस दिया हुआ है. टाइम मेरे पास क्या होता है? तो टाइम बेसिकली इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड. यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दो केस जो मेरे पास दिए हुए हैं, T2 by T1 मुझे करना है और कुछ नहीं. सर T2 minus T1. T2 क्या है? सेकंड केस जब मेरे पास स्पीड ज्यादा होती है. तो स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा. सॉरी, स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम होगा. दैट विल बी माय सेकंड केस. फर्स्ट केस में क्या होगी? मेरी स्पीड कम होगी तो उसमें टाइम ज्यादा लगा. टाइम क्या होता है? तो अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. बट इन केस में देखना क्या ध्यान रखना है आपको, डिस्टेंस दोनों केस में सेम दिया हुआ है. ठीक है, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो सेम है. तो दिस विल बी डी डी ओनली. राइट. और ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, टाइम का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आवर्स का आ रहा है. ठीक है, ये 2 आवर्स का डेल्टा टी है बेसिकली है. तो 2 आवर्स का डिफरेंस है. डिस्टेंस वही है. स्पीड जब ज्यादा थी तो 2 घंटे ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी कि 10 की स्पीड पे माइनस 15 की स्पीड. ठीक है, यू कैन सॉल्व दिस वन टू फाइंड आउट द डिस्टेंस. सो दिस विल गिव यू 15 minus 10. सिंपली अगर मैं करता हूँ और 30 से करते हैं, this will give me 2 is equals to d कॉमन आ जाएगा. this will become 3 minus 2 upon 30. 30 is the LCM. ठीक. सो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी मेरी 60 किलोमीटर. so I got the distance. ठीक है. अब हमें निकालना है at what speed must he travel to reach A at 1 PM. ठीक है. So I'll take any of the example. मैं कोई भी केस कंसीडर कर सकता हूँ. Let me take the case 1 जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है. केस 1 क्या दिया हुआ है? 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 2 PM पे पहुंच रहा है. ठीक है. 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस अगर 60 किलोमीटर है, ठीक है, तो टाइम कितना लगता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस है 60, स्पीड है 10, यानी कि 6 आवर्स टाइम लगता है. और ये 6 आवर टाइम कितने बजे खत्म होता है? ये खत्म होता है मेरा 2 PM. और 2 PM पे खत्म हो रहा है तो स्टार्टिंग टाइम कितना होगा मेरा? दैट आई नीड टू कैलकुलेट. तो स्टार्टिंग टाइम विल बी 2 PM minus 6 आवर्स, यानी कि 2 घंटे और 4 घंटे, यानी टोटल 8. so you can say 8 AM was the starting time. 8 AM 8 AM was the starting time. तो 8 बजे उन्होंने चालू किया. नाउ द फाइनल कंडीशन जो मेरे से पूछी गई. ठीक है, अब हम उस पे आ जाते हैं. तो 8 बजे चालू किया है एंड ही वांट टू रीच एट 1 PM. सो 8 से 5 यानी 8 से 1 यानी कि 5 आवर. सो टाइम नाउ, टाइम आई हैव इज 1 PM minus 8 AM which is basically 5 hours. डिस्टेंस है मेरे पास दिया हुआ 60 किलोमीटर. सो स्पीड जो होगी, जो चाहिए होगी, दैट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 12 किलोमीटर आता. ठीक है. क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट ट्विस्ट करके दिया हुआ है. यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, दैट्स इट. ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, और आंसर बहुत सिंपल आ जाएगा. लेट्स ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट वन. Try to solve this.
So 71. Yes, that's correct answer. Okay, good. So, and man on two travels first. Okay, a man on two travels first 160 kilometers at 64 kilometers per hour, and next 160 kilometer at 80 kilometers per hour. What is this एवरेज स्पीड है? मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। मैंने इससे पहले जैसे बताया था, जब भी एवरेज स्पीड आती है तो हम क्या करते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और द हैक इज कि यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 320 किलोमीटर्स। टाइम हमारे पास नहीं है, तो टाइम हम इंडिविजुअल केस के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस के लिए क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस है 160, स्पीड है 64। ये टाइम फर्स्ट केस के लिए हो जाएगा। सेकंड केस के लिए हो जाएगा 160 अपॉन 80। ठीक है, तो you need to solve this equation and you'll get some answer nearby 71.11 किलोमीटर पर आवर। just check it once, ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा, ओवर हियर आल्सो अगर आप दोनों स्पीड का एवरेज लेते हो, so it will be somewhere near 64 72 किलोमीटर, which is different than this one। ठीक है, तो लोग सोचते हैं भाई डिस्टेंस सेम है, if we can take the average we'll get the answer। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। एवरेज स्पीड will be difference than what is the average of the speeds। the correct answer, pretty simple question। कुछ है नहीं इसके अंदर ज्यादा। the thing is you need to understand कि एवरेज स्पीड जो होती है वो अलग तरीके से गिनी जाती है। इट इज नॉट द एवरेज ऑफ द स्पीड्स। ट्राई टू सॉल्व दिस वन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बता देता हूँ क्या है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर्स पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको स्पीड दी हुई है इंक्लूडिंग स्टॉपेज एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज। तो स्टॉपेज, बस जब भी चलती है तो बहुत सारे स्टॉपेज होते ही है। तो अगर उन स्टॉपेज को हटा दे तो हमारे से 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, लेकिन अगर उसको इंक्लूड करते हैं तो स्पीड उसकी कम हो जाती है। अब ये बताया हुआ है, पूछा हुआ है कि अगर इतनी स्पीड कम हो रही है तो एक्चुअल में कितने टाइम के लिए बस रुकी। अच्छा, व्हाट आई विल डू इज आई विल जस्ट सिंपली टेल यू द आंसर की क्या है। सो जो बस है, अगर स्टॉपेज को इंक्लूड करते हैं और स्टॉपेज को माइनस करते हैं, इंक्लूड करते हैं तो स्पीड हो जाएगी 54 kmph, इसको करते हैं तो 45 kmph। तो बेसिकली जो डिफरेंस आ रहा है दैट लाइज इन 9 किलोमीटर पर आवर। 9 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस। ठीक है, मतलब एक घंटे में 9 किलोमीटर जितना डिस्टेंस बस ट्रैवल कर सकती थी, उतना जो टाइम था वो स्टॉपेज में चला गया। ठीक है, अगर 9 किलोमीटर जो ट्रैवल कर सकती थी एक घंटे के अंदर, इस ये 9 किलोमीटर ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है? सो दैट वी नीड टू कैलकुलेट, बिकॉज़ अल्टीमेटली हमको टाइम निकालना है। सो टाइम टेकन टू ट्रैवल 9 किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि अब स्पीड हमारी कितनी दी हुई है? 54 किलोमीटर पर आवर। सो टाइम विल बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 9, और इसके लिए स्पीड कितनी है? 54। तो दिस विल बी 1/6, सिंपली 1/6 ऑफ आवर। लेकिन हमें किस में निकालना है? मिनट में निकालना है। तो आवर को मिनट में करते हैं, मतलब हम 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो टाइम इन मिनट्स विल बी 1/6 into 60, that is 10। so 10 मिनट्स का टाइम जो था that is simply wasted in stoppages। ठीक है, सो जस्ट डिफरेंस है, जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ट्रैवल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, और उस टाइम को अगर आप मिनट में कन्वर्ट करते हो यू विल गेट द टाइम फॉर स्टॉपेजेस। दिस वन।
5 kilometers. Let's see what is the given in the question. If a person walks at 14 km/h instead of 10 km/h, 50 kilometers. he would have walked 20 kilometers more. What is the actual distance? अगर यहाँ पर देखो आपको स्पीड जो है in this question स्पीड आपको अलग अलग दी हुई है, डिस्टेंस भी अलग अलग दिया हुआ है बिकॉज पहले में अगर x मानते तो दूसरे में x + 20 दिया हुआ है, बट टाइम इज कांस्टेंट, राइट? दोनों केस में टाइम कांस्टेंट है, बस इसी को हमें देखना है. So time in the first case will be equal to time in the second case. Time क्या होता है? Distance in the first case upon speed in the first case equals to distance in the second case upon speed in the second case. अब distance in the first case कितना है? Let's say x है और speed कितना था? 10 किलोमीटर पर. सेकेंड केस में क्या हो जाता है? स्पीड अगर बढ़ाता हूँ मैं तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा. कितना ज्यादा होगा? तो 20 किलोमीटर ज्यादा होगा. स्पीड कितनी बढ़ेगी? 40. You just need to solve this. 14x equals to 10x plus 200. यहाँ से आ जाता है 4x equals to 200. यहाँ से x आ जाता है 200 by 4 that is 50. तो x हमने क्या लिया था? If you remember, x is the actual distance. Actual distance is 50 kilometers. सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं. जस्ट यू नीड टू थिंक कि भाई हमारे पास स्पीड भी अलग अलग दिया हुआ है, डिस्टेंस भी अलग अलग दिया हुआ है, बट टाइम जो है दैट इज अ कांस्टेंट एंड वी कैन यूज दैट. Okay, this is the last question for the day. Try to solve this one. So 60. Let's see what is the correct answer. Car covers first 300 meters at a speed of 54 km/h and next 500 at 72 per kilometer hour, 72 kilometers per hour. Find out average speed. So speed 1 की बात करते हैं. Speed 1 क्या था आपका? 54 kmph. देखो ये ना एग्जाम के अंदर बहुत अच्छी सी चीज होती है जो आपको नोटिस करनी होती है कि इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो. बस आपको जितनी भी स्पीड दी हुई है ना दैट इज अ फैक्टर ऑफ 18. तो 18 से डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगी. सो 18 3 is 54 and 3 into 5 is 15 मीटर पर सेकंड. ठीक है. इसमें कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है? इसमें डिस्टेंस कवर किया हुआ है 300 मीटर. सिमिलरली स्पीड 2 is 72 किलोमीटर पर आवर. दैट इज 72 5 by 18. Again, 18 4 is 72, 4 into 5 20 meter per second. That is the second speed. And इस केस में जो distance दिया हुआ है that is your 500 meter. So let's calculate the average speed. This was the total distance. Distance कितना है? 300 plus 500 and time. So पहले केस में time होगा distance upon speed यानी कि 300 upon 15 and दूसरे केस में भी 500 upon. This becomes 800 upon 300 by 15 is 20 and 500 by 20 is 25. This becomes 800 by 20 upon 25, that is 45. If you solve this one, what is the answer? 17.77. 17.77.
इधर मैं इसको कैंसिल करता हूँ, I'll get 116 upon 9 meter per second, and you can solve this one. 17 point something आएगा. और yes, in order to find out अगर ऐसा लग रहा है कि आंसर नहीं है, what we'll do is we'll convert it into kilometer per hour. 64. किलोमीटर पर आवर बेसिकली क्या करते हैं, 18 बाय 160 into this becomes 9 1 the 9 2 the 5 1 the 5 30. 32 into 2 is 64 km. That is the average speed. Or this one, whatever has been given in the question, then you should be able to. Right. So this was some of the questions related to speed and time. Tomorrow also we'll cover some of the questions, and then we'll start with the next topic. अच्छा, यहाँ पर आपको जो basic aptitude है, जो heat के अंदर पूछा जाता है, जो उन्होंने mention किया हुआ है. This is the last topic that we are going to cover. Maybe tomorrow also we'll be dealing with many of the questions. कल हम खत्म करते हैं इसको. Then we'll move on to the next topic. So we'll stop over here. In case if you have any doubt, you can ask, or you are free to.